Hello everyone, and a very good afternoon to all of you, and welcome to Career Launcher. So, I hope you are aware that every day at 3 p.m. we come up with the Hindu analysis. Today is Saturday, and we are here with the Hindu analysis of 18th January, that is Saturday. Okay. So, am I audible, visible? Everything is fine? If my voice is clear, please write yes in the comments. Am I audible? Is my voice reaching? Okay, so let us begin. So, in today's class, we will discuss. So today is 18th January, Saturday, and there was an article on the first page talking about Israel-Hamas truce deal. So a Gaza truce deal gets Israel Security Cabinet approval. So this is an article that we will be discussing today. And on the first page, there is another article. At least 126 Indians joined Russian army. 16 missing, says central government. So we will discuss both the things. Okay? So so let us move on to the first article. So the first article is Gaza truce deal. Truce मतलब क्या होता है? Truce का मतलब एक तरह से peace negotiation है ना, sort of a peace negotiation to stop the war or to stop the conflict. To stop the war. The Gaza truce deal gets Israel Security Cabinet approval. Means the Israel cabinet, the government also, the full cabinet. लेकिन the deal now goes to Israel full cabinet ministers for final sign off. So अभी जो Israel की security cabinet है, that has given approval. Now it will go to the full cabinet ministers. Means all the ministers then now is supposed to sign this deal. Okay. So the ceasefire could start as early as tomorrow. Means from Sunday onwards we'll be seeing ceasefire. Ceasefire matlab there will not be firing, or there will not be any firing from both the sides. That is what you should be knowing. Okay, so this is what actually happened. So let me first ask this question, then we will discuss a little bit about it. So the Israel-Hamas deal was brokered by, or the Gaza truce deal जिसको कह रहे हैं, Gaza truce deal, USA, Qatar, Bahrain, UAE. UAE means United Arab Emirates. What is the right answer? Anyone? Not actually USA भी कह सकते हो, but main actually was it happened somewhere else. ठीक है, actually it happened in Qatar. So B is the right answer. Although you can say USA भी कह सकते हो, but so the peace deal happened here. So here is India, this is Saudi Arab, here is Qatar. So this is the place where actually the deal happened. So the right answer is Qatar. Yes, Vidoshi, but you're right. And the capital of Qatar is Doha. And here you will find Israel and Palestine. Let me show this. है ना? तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, I hope you are aware that this region is called as West Asia also. Why I'm writing West Asia? The reason is because if you read today's Hindu editorial, the Hindu editorial talks about it. This region is called as West Asia. So that is what you should know. तो अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा, so this region is actually currently the West Bank. And this region is Gaza. And these two together are called as Palestine. So that is what you should know. And the rest of them is actually Israel. Okay. And so Hamas is an organization based in Gaza. So that is what you should be knowing. And there is an organization based in Lebanon also, which had done ceasefire a few months back or few weeks back. What is the name of that organization? कोई बता सकता है? This was also fighting a conflict, war and all. So later on they did a deal. What is the organization? Hezbollah. So these are the things you should be knowing. Okay. So yes, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो फिर से गौर से, तो ये this one is Gaza. This one is West Bank. And the rest green is Israel. Okay. This is what you should be knowing. So it says Israel Security Cabinet recommended approval on Friday of a ceasefire deal which happened between
Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed on agreement had reached and would pause the 15-month war with Hamas in Gaza and release dozens of hostages held by militants. So the hostage would be released, though Hamas ne, so they will release the hostage. So 7th October ke baad, there were hostages, and on that side they will stop the war or they will stop bombing, etc. So this thing was actually it was in the news and all. Okay, so Hamas triggered war with 7th October 2023 attack and all. So that is what you should be knowing. Now, I have made a separate video on it. So if you have not watched it, just go on YouTube or search karo Israel-Palestine career launcher. You will get this video. And I have discussed about each and every important points. Okay, so you पढ़ लीजिएगा because they cannot be asked in any exam. So please go and watch it if you have not watched it. ठीक है, इसको जाके देख लीजिएगा. Okay. Then on first page, there was another article. At least 126 Indians joined Russian army, 16 missing, says center. Now, I hope you are aware that there is a Russia-Ukraine war happening. So here is India, this is Russia, and this is Ukraine. So आपको पता होगा कि Russia-Ukraine war is happening. So this is Russia, ये वाला हिस्सा. This is Ukraine, this is Belarus. So they had Russia had attacked from this side, then from this side, है ना? फिर यहाँ से भी and all. So the war is happening, and there are a lot of cases where people from different countries, जैसे कुछ North Korea, यहाँ पर North Korea मिलेगा, here you will find North Korea. So there were reports that even people from North Korea also joined Russian military to fight. Even some Indians also went there to fight the war in Ukraine. So the article says, if you read it, that at least 126 Indian joined Russian army. यानी ऐसा है कि 126 Indian जो है गए थे fight करने के लिए war, और 16 मिसिंग है. मिसिंग है मतलब उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि where exactly they are actually. ठीक है. हाँ, so the Indian embassy in Moscow has been informed about 126 men in Russian armed forces belonging to India. Okay, so that is what you should be knowing. To fight in the war in Ukraine. This is what the External Affairs Ministry said. And indicating their number continue to rise despite efforts to stop them. So that is what is you should be knowing. जैसे इसमें लिखा ना है कि embassy men has been intimated about 96 have returned to India thus far, है ना? According to of the 126 men that Indian embassy in Moscow has intimated about 96 जो है वापस आ गए. One of the remainder 12 have been killed. उसमें से 12 लोगों की डेथ हो गई, conflicting, including one from Kerala who died last week. तो ये सब बता रहे हैं. And as many as 16 are missing and all. तो numbers तो नहीं याद रखना, but एक basic idea होना चाहिए that you should know about Russia-Ukraine war. So I'm actually planning कि very soon जो 6 PM पे class होती है Monday to Thursday. So very soon, maybe the upcoming week or maybe next to next week, I will schedule a class on Russia-Ukraine war because I think that is also important. तो मैं उस पर class लूंगा, ठीक है? And who is the current spokesperson of Ministry of External Affairs? MEA के spokesperson कौन है? कोई बता सकता है? Because this is asked in different exam. MEA means Ministry of External Affairs, या Foreign Ministry जिसको कहते हैं. So who is the spokesperson of Foreign Ministry? Can anyone tell me? Not S. Jaishankar. Mr. S. Jaishankar is the Foreign Minister of India. Mr. S. Jaishankar is actually the Foreign Minister of India. मैं फॉरेन मिनिस्टर का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं स्पोक्स पर्सन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, हु इज एन IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर. देखो उनका नाम लिखा हुआ है, मिस्टर रणधीर जायसवाल. देखो यहाँ रणधीर जायसवाल, ठीक है, साफ से लिख देता हूँ. मिस्टर रणधीर जायसवाल इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. ये पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. ओके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. तो उन्होंने ही कहा है, ठीक है ना. सो देयर whereabouts are not known and the Russian side has categorized them as missing and all. Okay, let's move on to editorial. पेज नंबर 6 में जाना. So editorial is there. और मैंने आपको कई बार बताया कि these two जो टॉप पे editorial होता है, ये author का नाम मेंशन होता है, author's name is mentioned, ठीक है. और ये दोनों होता है authorless होता है. Authorless in the sense कि there is no author name. It means it represents the opinion of the Hindu editors. ठीक है, मतलब author का नाम नहीं mention होता है, the name is not mentioned. So let us begin with this article, which has been written by C. Rangarajan sir. He's actually earlier served as RBI governor, and Mr. D.K. Srivastav is honorary professor at Madras School of Economics and all. ठीक है.
16 फाइनेंस कमीशन की चेयरपर्सन वगैरह मेंबर रह चुके हैं. सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आ गया. अब देखो मैं आपको इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स, ये सब क्या होता है, बिकॉज आई नो इट्स स्लाइटली ऑन अ डिफिकल्ट साइड फॉर यू. तो आपको इतना नहीं जानना है, लेकिन आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सब की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी? व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, जीडीपी को डिफाइन कैसे करते हैं? प्लीज टेक अ मैराथन प्राइस योर स्टिल ऑर्डर्स. ओम भास्कर. देखो संडे को 9 PM में क्लास होती है, ओम भास्कर, where we discuss the static GK, ठीक है, which will be helpful in AMU, जामिया, MH, CT. So even for Christ University that would be helpful. तो आप कल 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन कीजिएगा. ओके, आई एम सेइंग टू ओम भास्कर. ठीक है, हाँ बताइए. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हाँ, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट्स एक्चुअली टोटल वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced in a country, है ना, services produced in a domestic territory in a country. Why I'm saying, because मैंने देखा ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछते हुए कि this word is total value of all final goods and services is what. So 4 ऑप्शन दे देंगे, या रिवर्स में पूछते हैं GDP is what and they give 4 options like that. So you have to be careful. ठीक है, इस तरह का वर्ड्स पता होना चाहिए. तो उससे बात है रियल और नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट प्राइसेस पे चेक किया जाता है. सो दिस इज कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइसेस, और रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस, यानी बेस प्राइस होता है बेस ईयर पर. आज से 23. हाँ, ग्रेट, वेरी गुड. हाँ, अब ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ बिकॉज इतना डिटेल नहीं जाना आपको, बट यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. देखो मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए शर्ट का प्राइस है 100 रुपया, एंड इन 1 year कंपनी सोल्ड 100 shirts, सो 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हुआ इसका जीडीपी में. ठीक है, नेक्स्ट ईयर लेट्स से दैट प्राइस बढ़ गया शर्ट का 120 हो गया और शर्ट नंबर वही रहा 100. So now the GDP's contribution will be 12,000. But reality में क्या है? Reality is that कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन तो साइन होता है कि इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो की होगी, लेकिन इकोनॉमी ग्रो कहाँ की? दोनों में तो शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग इक्वल है. So basically it is because of inflation. इन्फ्लेशन के कारण आपको लग रहा है कि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. So if you are calculating this one, इसको कहते हैं रियल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन. मींस व्हाटएवर इज द करंट प्राइस ऑन दैट ईयर, उस बेसिस पर. और इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए टू एडजस्ट दैट, सॉरी, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, है ना. अगर इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बेस ईयर चूज कर लेते हैं और उसकी प्राइस हर जगह लेते हैं. तो मान लेंगे कि बेस ईयर में, लेट्स से दिस इज द बेस ईयर, उसमें 100 रुपीज है शर्ट का, तो हर जगह 100 रुपीज लेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 or 10 years, इवन इफ द प्राइसेस हैव इंक्रीज. तो उस केस में जो कैलकुलेशन होता है उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी. ओके, इतना नहीं समझ में आया तो आप इसे समझ लेना कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइस पर होता है, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर होता है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है. यानी इसमें इन्फ्लेशन अगर होगा भी तो इसका असर नहीं दिखेगा. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट सीन इन रियल जीडीपी. दैट इज द आइडिया. ठीक है, मतलब हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है ताकि इनको पता चले, रियल सेंस में पता चले कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज हुआ है कि नहीं प्रोडक्ट्स. सो दैट इज व्हाट इज रियल जीडीपी. ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. परसेंटेज वगैरह नहीं याद रखना है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, फ्यू मंथ्स लेटर यू विल अटेम्प्ट द एग्जाम, तो कुछ और रहेगा उस टाइम पर. तो भाई 2024-25 का यूनियन बजट लास्ट ईयर जुलाई में पेश किया गया था. नाउ विल बी हैविंग ऑन 1st February विल बी हैविंग अ न्यू बजट. ठीक है, सो विल बी हैविंग अ क्लास फॉर दैट. प्लीज फॉलो दिस क्लास, दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1st February को विल बी हैविंग अ बजट, तो याद रखिएगा. ओके, तो इसमें बता रहे हैं, इतना डिटेल नहीं जाना कि किसमें शार्प फॉल हुआ, किसमें शार्प इंक्रीज हुआ, इतना डिटेल आपके लिए काम का नहीं है. कुछ टर्म्स बताना चाहिए, जैसे उन्होंने ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात की है ना. सो दे हैव डिफाइंड, दे हैव टॉक्ड अबाउट इट. At constant price has range between इतना and इतना. So what is gross fixed capital formation? वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझ लो है. Gross fixed capital formation is actually also called as investment, है ना.
defined as the acquisition of produced assets including the production of such asset by produce for their own use minus disposals and all. मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन टेल्स यू कि इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, whether they are investing in India's economy or not. That is how it actually tells you. फिर एक और कीवर्ड है, बिकॉज कीवर्ड्स पूछे जाते हैं. Incremental capital output ratio and has been marginally higher than 5 in recent years. So ICOR क्या होता है? So let me tell you, देखो incremental capital output ratio. Capital output ratio. अब ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं. इसे मेरा हाउ मच एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट. हाँ, इंक्रीमेंटल का आउटपुट एडिशनल कैपिटल लो, ये इंक्रीमेंटल. चलो मैं ऐसे ही बताता हूं. मान लो कि कोई रोड बना रहे, हाईवे या कुछ भी ऐसे ही, कोई भी जो मान लो हॉस्पिटल, आई एम जस्ट गिविंग सैंपल. तो हम कितना कैपिटल इसमें लगाएं? मान लीजिए हम इसमें 100 करोड़ लगाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. सो आई विल सी, लेट्स से कि 1 ईयर, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग, आई मीन दिस इज एन हैफेजेड एग्जांपल, इट मे नॉट बी ट्रू टू द रियलिटी, हो सकता है उसका नंबर्स कुछ और हो. अगर हम 100 करोड़ रुपया, नहीं 1000 तो नहीं, ज्यादा होगा ना, मान लो 1 लाख लोग का इलाज हो जाएगा इन 1 ईयर. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इफ आई इन्वेस्ट 100 करोड़, तो अब इसमें है क्या, कैपिटल आउटपुट रेशियो में होता क्या? अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, इफ इट इज हाई, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है कि कम है? इज एफिशिएंसी हाई और लो? क्या बताइए प्लीज टेल मी. कैपिटल बाय आउटपुट. तो अगर नहीं आता रहा तो आप समझ लो कि अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब कैपिटल ज्यादा लग रहा है आउटपुट जनरेट करने के लिए. तो हाई आईसीओआर का मतलब होता है एफिशिएंसी इज लो. यस, कैसे? आईसीओआर मतलब क्या हो? कैपिटल आउटपुट रेशियो. ऊपर कैपिटल है, नीचे आउटपुट है. तो अगर ये बड़ा नंबर होगा, ऊपर वाला नॉमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या है? तभी ना आईसीओआर बड़ा होगा नंबर में. सो इफ आई एम सेइंग आईसीओआर इज बिग, इसका मतलब है कि आपको बहुत ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होगा. इसका मतलब ये ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है आउटपुट जनरेट करने के लिए. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में तो हम सिंपल लैंग्वेज बताते हैं. मान लो कैपिटल है और ये आउटपुट है, ठीक है, इसको आप 1 मान लो नीचे को, ठीक है, और कैपिटल को चेंज करते जाओ. मान ली 2/1 है पहले केस में, 2/1. दूसरे केस में कैपिटल और बढ़ा दिए तो 3/1 हो गया. दूसरे चौथे केस में 4/1 कर दिए. तो आईसीओआर तो इधर बढ़ते जा रहा है, लेकिन एफिशिएंसी खराब मानी जाएगी यहां से आ जाते हुए. क्यों? बिकॉज कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है ना. कैपिटल यहाँ 4 रुपया लग रहा है 1 रुपया जनरेट करने के लिए. So if ICOR is on a higher side, it shows lower poor productivity. यानी ज्यादा कैपिटल खर्च हो रहा है रिजल्ट देने के लिए. Yes or no? I hope it is clear. है ना? So you have to invest more capital to get the productivity. That is called as ICOR, incremental capital output ratio. So the lesser it is, the good it is. जितना कम incremental capital output ratio, उतना अच्छा माना जाता है. ठीक है? So that is what you should be knowing. So ये सब टर्म्स से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. So that is why I am discussing. Then actually it's talking about that Donald Trump's assumption of office may create more uncertainty. Why? Because past में अगर हम लोगों ने देखा होगा, I'm sure you must have seen this. ये आर्टिकल आ रही, Canada warns of biggest trade war. So when Donald Trump came to power last time also there were incidents of trade war. जैसे क्या हुआ था कि हार्ले डेविडसन वाला केस हुआ था 2019 में. So actually इंडिया जो है ना टैक्स लगाती है 50% इंपोर्ट टैरिफ. तो जैसे मान लो कि यूएस से कोई हार्ले डेविडसन बाइक है, वेरी फेमस. So if Harley Davidson bike is coming, मान लीजिए ये 10 लाख की बाइक है, and if India is imposing 50% tax, so the price of this would become 15 lakh in India. Okay, so this was not liked by actually Donald Trump. It said you have to reduce it. Why? Because अगर टैरिफ ज्यादा हो जाता है, if there is more taxes, then its price will increase and there will be less chance of sale. तो होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प इन द पास्ट हैड सेड कि यू हैव टू रिड्यूस द टैक्सेस. ओके, एंड देयर आर इंसिडेंट्स वेयर इन फैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प हैड थ्रेटेंड चाइना कि अगर इफ यू इंक्रीज द टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्स, आई विल आल्सो इंक्रीज. तो जिसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दीस टर्म्स. ट्रेड वॉर कि अच्छा इफ यू इंक्रीज द टैक्स और इफ यू इंक्रीज एक्चुअली द इंपोर्ट टैक्सेस, वी विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्चुअली टॉक्ड अबाउट. ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा.
और चाइना यूएस ट्रेड वॉर काफी फेमस हुआ था ड्यूरिंग द डोनाल्ड ट्रम्प टाइम, जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट कैंपेन में ही बोले थे that I will propose a 60% tariff on Chinese goods. So if my government will come to power, we will impose more tariffs, more taxes. So अगर ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो क्या होगा? That Chinese goods will become costly. जैसे चाइना का कोई प्रोडक्ट हमारे लिए यूएस आ रहा है, इसमें टैक्सेस ज्यादा लग जाए या टैरिफ्स, वही टैक्स हुआ एक तरह का, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब तो उससे क्या हो जाएगा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स विल बिकम कॉस्टली हियर, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग सोल्ड विल बी लेसर, सो चाइनीज प्रोडक्ट विल बी लेसर कॉम्पिटिटिव. ओके, तो इसको एक तरह का ट्रेड वॉर का एग्जांपल होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्शनिज्म, कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर के से टैक्स लगा करके. इज इट क्लियर? So that is what we are saying, it we are not 100% sure, uncertainty hai after the assumption of Donald Trump coming to power and all, we are not 100% sure about what will happen at the global level. I think it's clear. Sir, my first gonna happen on, yes, then we mission, nothing to worry. आप जितना पढ़ रहे हो, so keep on watching our the Hindu analysis classes, ठीक है ना? So first में अगर आपका नहीं भी अच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है? So keep on whatever, if you are a paid batch student, you must be provided magazines and whatever we are doing the Hindu analysis class और YouTube पे जो जी सेशन कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए. ठीक है, ओके, ठीक है. तो इसी सब की बात करें, अब इसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहे. देन however after the 8 months the level of government's capital expenditure has remained limited to 5.1 lakh, that is 46% of the budget and all. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट होता है, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट हियर बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि जब 1 फरवरी को विल बी हैविंग अ सेशन ऑन बजट, उसी वक्त डिस्कस करेंगे, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर. ठीक है, सो 1 फरवरी को देयर विल बी अ बजट, सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देयर. ठीक है ना? सो लेट अस मूव ऑन. फिर साइड में एक आर्टिकल थी इन्फ्लेशन मैट्रिक्स. इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? महंगाई जिसको हिंदी में कहते हो सिंपल लैंग्वेज में, राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? And it is mostly measured through process, consumer price index and wholesale price index, WPI and CPI, है ना? ये दो इंडेक्स है. The author is talking about that we are having a new governor of RBI. I'm sure. What is his name? So I have 3 questions for you. ठीक है, who is the new governor of RBI? Who is the new ISRO chairman and who is the new CAG, Comptroller and Auditor General of India? Please tell me. तीनों का आंसर बताइए. I'll be very happy to know because these are very important, और ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है. अगर देखो क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एनीवन यू कैन आंसर. अगर आपको नहीं पता है, कोई 3 में से कोई एक पता है तो बता दो. ये सारे जो है ये पिछले एक महीना के अंदर की बात है, 1-1.5 महीना के अंदर. In the last 1 or 2 months, these 3 posts we have seen new people. Anyone? Mr. Sanjay Malhotra, right? Zidan Fayad, you're right. RBI governor. What about new ISRO chairman and what about new CAG? V. Narayanan. Yes, then Mishra, very good. You have answered question 1 and 2. And question 3, new CAG. So basically, yes, Zidan Fayad, right? The new RBI governor is Mr. Sanjay Malhotra. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. Earlier was Mr. Shaktikanta Das. Now is Mr. Sanjay Malhotra. ये याद रखिएगा. ठीक है. Then we have Dr. V. Narayanan. ठीक है. So the new ISRO chairperson है ना, 13 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर किया है ना. And the CAG is Mr. K. Sanjay Murthy. Yes, someone has answered. Yes, Hari, you are right. So K. Sanjay Murthy is the new CAG of India. है ना, ये नवंबर की न्यूज थी, है ना. And he has succeeded Girish Chandra Murmu. Okay, yes. है ना. So that is what is being talked about. देखो CPI की बात हो रही, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स which measures this, है ना. CPI is actually released by National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation. Similarly, है ना, similarly WPI wholesale price index is released by Ministry of Commerce and Industry. उसके अंदर होता है डिपार्टमेंट
एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वही निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स विच टेल्स अस हाउ द इन्फ्लेशन इज इन होलसेल मार्केट। और ये वाला जो है ये जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस टेल्स द इन्फ्लेशन इन रिटेल मार्केट। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। ओके, सो वी आर डन। हाँ ठीक है, तो इसमें बता ये रहे कि द गवर्नमेंट इंडस्ट्री वांट्स द आरबीआई टू कट इंटरेस्ट रेट टू रीइनवाइगोरेट कंजम्पशन, फीडिंग ग्रोथ बाय लुकिंग थ्रू वोलेटाइल फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल। ओके, तो देखो एक्चुअली क्या है, एक दो चीज आपको पता होना चाहिए, चूंकि वोलेटाइल की बात हो रही है। जनरली फूड एंड फ्यूल जो होता है ना, या फ्यूल मतलब जो एनर्जी वगैरह, इसको वोलेटाइल कहते हैं। इसकी वोलेटिलिटी हाई होती है, मींस द फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस आर वेरी कॉमन। अगर आपने देखा होगा कभी कभी सडनली एक दो दिन के अंदर प्याज का दाम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, है ना। और एक दो दिन के अंदर, है ना, सेम हैपेंस विद फ्यूल, कभी कभी इंटरनेशनल रीजन से और बिकॉज ऑफ सम रीजंस इट कैन हैपन। तो इसकी बात हो रही, ठीक है। अब मैं इतना डिटेल अभी नहीं जानूं बिकॉज वी हैव टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तभी आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज पढ़िएगा। रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट, एंड एक ये दूसरा पढ़िएगा स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, और तीसरा पढ़िएगा कैश रिजर्व रेशियो, CRR. So these three are very important. ठीक है, so you will understand it after that कि what is actually this. तो पहले आप ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। Okay, so we teach these things in detail in paid classes, but I'm just giving a rough idea about this कि ये तीनों पढ़िएगा। These are used to control money supply in the economy, ठीक है, by RBI and Monetary Policy Committee। ठीक है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके यूट्यूब पे जब सर्च करना तो आपको मिल जाएगा, ऑल अबाउट RBI एंड यू राइट कैरियर लॉन्चर, ऐसे करके सर्च करना, लॉ एंट्रेंस ऐसे सर्च करोगे ना, सो यू विल गेट दैट, एक ब्लू कलर का थंबनेल होगा, उसमें RBI के बारे में मेंशन है। आई थिंक 2 months बैक आई मेड दैट वीडियो, सो गो एंड वॉच इट। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें बात करते हैं। सो दे आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, जैसे एक नॉर्थ ब्लॉक की बात करें, एक मिंट स्ट्रीट। सो नॉर्थ ब्लॉक मैंने पता है कौन सी जगह, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है, दैट्स कॉल्ड एज नॉर्थ ब्लॉक इन दिल्ली। सिमिलरली मिंट स्ट्रीट जो है, मिंट स्ट्रीट इज द प्लेस एक्चुअली इन मुंबई वेयर यू विल फाइंड RBI ऑफिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ओके, यस। Now, नीचे में एक आर्टिकल थी, so the multiple layers of Gaza ceasefire, although we have discussed about Gaza ceasefire, but that is what he is talking about, that just the outgoing president Joe Biden has actually, and the new president is about to take charge on 28th January. We have seen Gaza's truce and all, and the state of Qatar long stuck in between as a mediator. So main mediator जो थे वो state of Qatar थे. Okay, so that is what you should be knowing it. An exchange of Israeli hostage and Palestinian prisoners have also been done. इजराइल के जो हॉस्टेज उनको छोड़ देगा हमास, और पैलेस्टीन के जो प्रिजनर्स अरेस्ट हुए हैं वो इजराइल छोड़ देंगे। That's the actually idea. So they will release each other's hostages and prisoners. That is what the idea is. Okay. तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, here is India. This region is called as West Asia. मैंने बताया, so this is being used many times, this term in this article. Okay. तो ये सब हो गया. We have discussed about that on 7th October we have seen an attack and all, and after that these things happen. ठीक है, तो मैंने वो वाला वीडियो कहाँ चला गया? I had made a video. मैंने आपको बताया था ना इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर. I have already made a video. Let me show. इसने नहीं देखा है, हाँ ये वाला, this video. Please go and watch it. ठीक है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट बिकॉज मैं सारा कुछ डिस्कस कर ऑलरेडी डिस्कस है, और ट्रूथ से रिलेटेड ये है कि वो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात हुई है ना, कि दे विल स्टॉप द वॉर, आई मीन बोथ साइड विल स्टॉप द वॉर एंड देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो काम की चीज, मतलब जो टर्म है जो आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है टू स्टेट सोल्यूशन। सो टू स्टेट सोल्यूशन, इवन इंडिया आल्सो बिलीव्स इन दिस। तो अभी देखो ये 13 December 2024 का है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has also reiterated that India's policy towards Palestine has been long-standing and includes support for negotiated two-state solution and establishment of a sovereign, independent, viable state of Palestine. Okay, living side by side in peace with Israel. तो जैसे ये भी हुआ था लास्ट ईयर अप्रैल में,
She is Miss Ruchira Kamboj, and at that time she was India's permanent representative to United Nations, and she had said, we are committed to Israel we are committed to support two-state solution, India on Israel-Palestine conflict, है ना. So two-state solution क्या होता है? Two-state solution का मतलब ये है कि मैंने आपको दिखाया भी था, कहाँ चला गया वो मैप. So मतलब जैसे ये वेस्ट बैंक है, I've just discussed, this is वेस्ट बैंक, ठीक है, and this is Gaza, and these two together are called as Palestine, ठीक है. ओके, तो दिस इज नॉट और रेस्ट जो है ना, जो मैं रेड से बना रहा हूँ, रेस्ट इज एक्चुअली इजराइल. सो इजराइल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्री एट यूनाइटेड नेशन, बट पैलेस्टीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्री और एज अ मेंबर. सो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है टू स्टेट सोल्यूशन का, व्हेन इंडिया सेज वी बिलीव इन टू स्टेट सोल्यूशन, so India says that we want that UN as well as Israel as well as Palestine, and both should be recognized as a country. That is the idea. So इसको two state solution कहते हैं. Okay, so this you should be knowing about it. So India supports the idea of two state solution, then both should be recognized as a country and all. ठीक है, तो इंडिया ने कई बार इसको reiterate किया है, पहले भी, पास्ट में भी. So we have just said that at that time the India's permanent representative to United Nations was Ms. Ruchira Kamboj. Who is the current India's permanent representative to United Nations? What is his name? Please tell me, because these are asked in the exam. India's permanent representative to UN. What is the name of the person? And these are very important. इसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्टली पूछते हैं कि which of the following is India's permanent representative to UN. That is why I'm saying his name is Mr. Parvathaneni Harish, या P Harish करके याद रख सकते हो if you cannot remember. Mr. P Harish. Yes, Zidan Fayyad, you're right. Great. So India's permanent representative to United Nations, है ना, is a Indian Foreign Service officer of 1990 batch. ठीक है. Then एक और चीज आर्टिकल बात हुई वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ अब्राहम अकॉर्ड. तो आपको पता होगा वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कि इजराइल और यूएई के बीच एक अकॉर्ड हुई थी 2020 में, दैट इज कॉल्ड एज अब्राहम अकॉर्ड, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन CLAT 2020 बेस्ड ऑन दिस. पूरा एंटायर पैसेज आया था इस पर. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इफ यू हैव सीन द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, तो उसी को इन लाइन में रहते हुए जब G20 समिट हुई थी इंडिया में, so when the G20 summit happened in India in 2023, this concept of India Middle East Europe economic corridor was discussed. अब ये क्या proposal है, we will discuss little bit. देखो actually क्या है, अगर आप देखोगे, ideally if you want to go via ship from India to Europe, मान लिया आपको UK जाना है या फ्रांस जाना है, तो शिप से आप ऐसे जाओगे. This is the route, right? जैसे अगर फ्रांस जाना है या अगर इंग्लैंड जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा. And this is actually called as, है ना, ये वाला जो है दिस इज स्विस कैनाल ऑफ इजिप्ट. बट एक अल्टरनेट रूट होना चाहिए, बिकॉज वी हैड सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स, अगर मान लो कि इजराइल की या किसी की शिप आती, सो दिस हैव बीन अटैक्ड हियर बाय हमास. सो यमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमास हैड अटैक्ड, हमास नहीं, हाउथीज, सॉरी. आई होप यू आर अवेयर. So to have some, even before this war actually started, this proposal was given that there should be an alternate route ऐसे करके. That is the alternate route. So कैसे alternate route होगा? So this is actually, मान लीजिए मुंबई से गए शिप से, आप गए यूएई दुबई, यहाँ मान लीजिए यूएई से लेकर के रेलवे लाइन बिछा दिए गए जॉर्डन होते हुए इजराइल होते हुए, यहाँ हैफा पोर्ट इज देयर इन इजराइल, पर यहाँ से शिप से फिर देन यू कैन गो टू यूरोप. And this is called as this is a proposed site, IMEC. ये भी proposal था. This proposal was given during G20 summit in 2023, just before that 7th October attacks, just 1 month before that. But this is yet still a proposal, and it is yet to be implemented. इसको कहता है IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. That is what you should be knowing about. Okay, is it clear? I think it's clear, Anna. So that is what is being talked. Then side में article they're talking about deciphering of Indus script should not be clouded by politics and all. Yes, recently we have seen the Tamil Nadu Chief Minister announcing that he will give $1 million prize for deciphering, means decoding
इंडस वैली स्क्रिप्ट। नाउ व्हाट इज दिस? ठीक है, तो पहले आप समझ दो देखो यहाँ पे हेयर इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। तो यहाँ पर देयर वाज यूज्ड टू हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वही 2500-3000 बीसी में। देखो यहाँ पे दे हैव रिटन द ईयर, है ना, समवेयर दैट्स व्हाट 3000 to 1500 बीसी लिखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो IVC और व्हाट वी कॉल इट एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक रिवर थी, देयर वाज इवन टुडे इट इज वी हैव अ रिवर कॉल्ड एज इंडस रिवर, है ना। ओके, तो इसके जो स्क्रिप्ट है इस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वही इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आई एम प्लानिंग टू हैव वन सेशन ऑन इट, अगर मौका मिलेगा। सो मे बी नेक्स्ट वीक देयर विल बी सम क्लास। तो उसमें यह है कि दैट वाज डिस्कवर्ड, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जमीन के अंदर था, बट इन 1924 इट वाज डिस्कवर्ड व्हेन जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनके जमाने में, सो ही वाज द DG ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, and it was found by Dayaram Sahni, and there was one more person. So two people actually found zameen ke andar, like after excavating, that there are these things were there. ठीक है, तो इसी के बारे में बता रहे हैं, है ना। complex as better known as civilization Egypt, हाँ, उसी जमाने में, the same time we had Mesopotamian, Egyptian and Chinese civilization, but Indus Valley is considered as more complex because we are yet to find out, decipher the seals, tablets, etc. डेसिफर मतलब डीकोड करना कि उसमें लिखा हुआ क्या है, जैसे लिखा हुआ क्या, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, एंड नोबडी हैज फाउंड क्लियरली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, एंड कि इसका मतलब क्या है। डेसिफर मतलब होता है डिकोड करना, है ना। सो नॉट डेसिफर्ड येट, यानी डिकोड करके पता नहीं किया जा सका है। बट यस, फ्यू थिंग्स वी नो। जैसे एक चीज है कि इट वाज रिटन राइट टू लेफ्ट, यानी ऐसे लिखा जाता था यहाँ से, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट एंड्स हियर। ठीक है, जैसे इंग्लिश या हिंदी तो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल डिफरेंट लैंग्वेज, बट दिस इज रिटन राइट टू लेफ्ट। और अब पता कैसे चला? सो उसको ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किताब है, तो अगर आप लेफ्ट से राइट लिखोगे तो यहाँ पर जाकर के डेंसिटी ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएगी, है ना, बिकॉज जल्दी एंड करना होता है सेंटेंस। तो उससे अंदाजा लगाया गया, मींस द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट दैट इट वाज रिटन राइट टू लेफ्ट, बट पता नहीं किया जा सकता है कि एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, उसका मतलब क्या है। सो इट इज येट टू बी फाइंड आउट एंड ऑल, येट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट। ओके, देखो एक और आर्टिकल थी, नॉट इन एडिटोरियल पेज बट बैक साइड में, आई थिंक वर्ल्ड पेज में या किसी नेशन पेज में, थ्रेट्स टू गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी कुड इंक्रीज, सेज डिफेंस मिनिस्टर। ये मैंने आपको कई बार और भी डिस्कस कराया, ये है गल्फ ऑफ एडन और ये है रेड सी। ठीक है, एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैंने आपको बताया है कि इफ एनी इजराइल बाउंड शिप कम्स हियर इन दिस रीजन, इजराइल बाउंड, ये इजराइल की, लेट्स से यूके, यूएस, फ्रांस की कोई भी शिप यहाँ पर आती है, any country which is an ally of Israel, so these are attacked by Houthis which are based in Yemen. So यहाँ पर यमन में there's a group who is controlling the Yemen on the western side, these are called as Houthis, and whenever a ship is coming, Israel based ship, they are being attacked. So that is what you should be knowing about. तो इसीलिए plus there can be, ये सोमालिया में there you must have heard this concept of Somalian pirates, both that has been very much aware, you must have heard this. So इस वजह से तो भी कोई भी शिप वगैरह जा रही, so of course that is actually a threat. So this is Red Sea, this region is Gulf of Aden, and this is Arabian Sea. ठीक है, that is what you should be knowing, है ना। देखो ये वाला रीजन है ना, गल्फ ऑफ एडन है, ये वाला रेड सी है, ये अरबियन सी है। ओके, और एक और आर्टिकल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रीड इट, वॉच्ड इट yesterday, it was very much in the news that Saif Ali Khan was attacked and all, and he was taken to the hospital and all. तो इस पे if there is any update, we'll update you, but I'm sure ये सब चीजें आपको बेसिकली पता होगा। So he lives in Bandra in Mumbai and all, etc. Okay, एक और है, पाकिस्तानी कोर्ट सेंटेंस इमरान खान एंड वाइफ टू प्रिजन फॉर ग्राफ्ट। ग्राफ्ट मतलब होता है करप्शन चार्जेस। ठीक है, अगर आप चाहना तो इसको पढ़ सकते हो, but I've just given an example. China's population declined for third consecutive year, straining economy. अब देखो ये बहुत सीरियस बात है। स्ट्रेनिंग में तो क्या होता है, कमजोर करना, इंपैक्ट करना। देखो एक्चुअली होता क्या, आई होप यू आर अवेयर, चाइना हैड अर्लियर इंप्लीमेंटेड वन चाइना पॉलिसी, देन मूव टू टू चाइल्ड पॉलिसी, अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ है।
Now, if there is very less population or young population is very less, what will happen? So it will create a problem. मतलब हुआ क्या कि इतना ज्यादा population control कर लिया that now it is problematic. और strictly population control के लिए what happened was कि youth population बची नहीं, बहुत कम है, और जो old people हैं जो 50-60 plus है वो ज्यादा बच गए. तब problem क्या होगा? So the old people want pension and support from young. तो यंग लोग बचे ही कम है जो इकोनॉमी ड्राइव कर सके. दिस इज द प्रॉब्लम इन जापान, इवन इन नॉर्थ कोरिया एंड इवन रशिया. दीज आर द प्रॉब्लम्स. So if we have seen incidents where Russia and North Korea and now even China is incentivizing people to have more children. अब जो है जैसे मैं देख रहा था है ना, जनरस कैश इंसेंटिव टू इनकरेज बर्थ्स आर पेइंग ऑफ इन वन चाइनीज सिटी. एक शहर में तो ऐसा हो गया कि बिकॉज वी आर सीइंग डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स. So if the population is controlled too much, that also can backfire, because in the next generation there will not be any young population left to support the older population. So अच्छा, एक concept है, I'm giving you homework. Total fertility rate. So after the class is over, please write in the comment what is total fertility rate and what is the ideal total fertility rate. कितना होना चाहिए, जिसको हम लोग replacement level कहते हैं. So go and find out. ठीक है. So and answer me. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Tomorrow I'll be meeting at 3 p.m. with a session on space docking. I hope you are aware. आपने सुना होगा कि इसरो ने space docking किया है, and this is very very important. So tomorrow at 3 p.m. we'll be having this session. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.